अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 4 विच इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता क्या है। द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल एज सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नोन एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। कह रहा है जो फाइनेस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल का, जो इसको हम देखते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप अगर देखें तो हमें फिगर 1.6 में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल दिया हुआ है और फिगर 1.7 में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल दिया हुआ है। दो ये सिमिलैरिटीज आर देयर, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं एनिमल और प्लांट सेल में, वो हम देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें प्लांट सेल को, तो इसके जो सबसे आउटर लेयर है वो है सेल वॉल विच इज इन डार्क ग्रीन कलर एज लेबल एज लेबल्ड। वाइल जो एनिमल सेल होता है उसकी जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। उसके बाद अगर आप देखें एनिमल सेल को, इसमें सबसे पहले सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है। उसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम है, रफा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी प्लेटस प्रेजेंट है। प्लांट सेल को देखें तो सबसे पहले आउटर हमारे पास सेल वॉल है, उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमारे पास क्या साइटोप्लाज्म है। उसके बाद आप देखें वैक्यूल। एनिमल्स में जो होते हैं वो स्मॉल और मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट में एक ही, ये आप देख सकते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। उसके अलावा जो हमारे पास क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कुछ ऑर्गेनेलीज हैं लाइक गोल्जी वेसिकल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल गिवन है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास विच इज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि सेल वॉल क्या होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। Many cells have an extracellular component that is formed exterior to membrane which is called cell wall। कह रहा है जब सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, लिविंग बाउंड्री होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट भी होता है जो मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेल वॉल। Cell wall is present in plant cells, prokaryotes, fungi and some protists. But animal cells do not have cell wall. This is probably due to their locomotor mode of life. Plant cell wall made up of cellulose differ in chemical composition from those of prokaryotes made of peptidoglycan and of fungi which is made up of chitin। कह रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स में एब्सेंट होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो तीनों की कंपोजिशन है, जो सेल वॉल की कंपोजिशन यानी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, वो तीनों में डिफरेंट है। प्लांट्स की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंजाई की मेड अप ऑफ काइटन और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। We will discuss here only plant cell wall. The cell wall is an extracellular structure of plant cell. The cell wall protects the plant cell, maintain its shape, prevent excessive uptake of water। कह रहा है जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, इसकी शेप को मेंटेन करती है और इसका एक्सेसिव अपटेक का वाटर से प्रिवेंट करती है, बचाती है। On the level of whole plant, the strong cell wall of specialized cells hold the plant up against the force of gravity। The cell wall is secreted by cell. The cell wall is porous, यानी इसमें pores होते हैं, and allows free passage of water and dissolved material। The plant cell wall consists of three main layers: primary cell wall, middle lamella and secondary cell wall। और जो प्लांट सेल वॉल है ये भी थ्री लेयर्स पे मुश्तमिल होती है: प्राइमरी सेल वॉल्स, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल।
वन बाय वन हम तीनों लेयर्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग cell आई during cell division. Each cell produce a primary cell wall. The primary cell wall is present inner to middle lamella. The primary cell wall is thin and slightly flexible. The primary cell wall is composed of cellulose microfibrils, bundles of cellulose chains running through the matrix or other polysaccharides like hemicelluloses and pectin. The microfibrils show a crisscross arrangement in layers one above the others. This feature gives the cell great strength. The primary cell wall is adapted to growth. The wall stretches plastically, i.e. irreversible. Next आ जाता है हमारे पास secondary cell wall. Secondary cell wall is formed between primary cell wall and plasma membrane. Only in sclerenchyma cells, the plant cells possessing secondary cell wall are generally dead and provide support for the plant. The secondary cell wall develops only when the cell has reached maximum size, i.e. completes its growth, because it is very much thick and rigid before it does not allow further growth. The secondary cell wall consists of cellulose, hemicellulose, lignin, inorganic salt, and waxes. Its cellulose microfibrils also show criss-cross arrangement. Lignin cements and anchors cellulose microfibrils together and is mainly responsible for rigidness. The secondary cell wall provides definite shape and mechanical support to the cell. In figure 1.9, you can see plant cell wall. There are three layers. You can see primary cell wall, secondary cell wall, and then middle lamella. Next is middle lamella. Middle lamella is present between primary and cell wall of adjacent cells which hold the cells together. It is composed of sticky gel-like magnesium and calcium salts and pectin. नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास सेल वॉल के बाद लेयर वो आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. Plasma membrane is also called cell membrane. It is the boundary of protoplasm and most organelles. It is found in all living prokaryotic and eukaryotic cells. It controls the passage of material into and out of cell. Next है हमारे पास composition of plasma membrane. Chemically, plasma membrane consists of proteins 60 to 80%, lipids 20 to 40%, and small quantity of carbohydrates. Structure of plasma membrane. Fluid mosaic model of plasma membrane. This model proposes that membrane is a phospholipid bilayer in which protein molecules are either partially or wholly embedded. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पार्शियली या होली यानी कंप्लीटली एम्बेड हुए हैं. The proteins are scattered throughout the membrane in irregular pattern just like large icebergs float in the sea. The pattern of distribution of proteins can vary from membrane to membrane and also vary on both surfaces of membrane. The membrane is about 7 nanometer thick. The lipid part of plasma membrane consists of two layers of phospholipids which are arranged in such a way that their hydrophobic ends face each other. Hydro means water and phobic means water hating, while hydrophilic means water-loving ends are appeared on the surface. The steroids, cholesterols are wedged into phospholipid bilayer at some intervals. The plasma membrane is asymmetrical, i.e. their two surfaces and halves are not identical. In general, most membrane proteins drift sideways in the fluid bilayer. The proteins within the membrane determine most of the functions. Carbohydrates are either attached to proteins and become glycoproteins or lipids. Glycolipids generally on the outer side of membrane. Filaments of the cytoskeleton are also present on the inner surface of membrane. These support the plasma membrane. In figure 1.10, you can see fluid mosaic model of plasma membrane. You can see
two phospholipid bilayers in which tails are facing each other and heads are opposing each other, and you can see some molecules of glycoproteins and glycolipids embedded in the layers, phospholipid layers. The lipid part of plasma membrane controls the fluidity of plasma membrane. When the concentration of unsaturated fatty acid in phospholipid becomes greater, the bilayer becomes more fluid, like that makes cell more flexible. The cholesterol helps to stabilize the lipid bilayer. It also restricts entry and exit of polar molecules and ions. Functions of plasma membrane proteins. A great variety of proteins are found in plasma membrane which may act as transport channel or carrier, enzyme, receptors or as antigens. कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी भी प्रोटीन्स है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, लाइक वो कैरियर के तौर पे काम कर रही होती हैं, वो एंजाइम के तौर पे काम कर रही होती हैं, वो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही होती हैं. Certain plasma membrane proteins are involved in passage of molecules through the membrane. Some of those have a channel through which a substance simply can move across the membrane. Others are carriers that combine with the substance and help it to move across the membrane. Some plasma membrane proteins have enzymatic functions. Some proteins in the plasma membrane are receptors that receive signals from other cells. For example, hormones circulate in the blood but bind to specific target cells with specific receptors. Some proteins are antigens which enable the cells to recognize other cells. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर्स. Mostly glycolipid and glycoproteins act as cell surface markers. They are involved in cell-to-cell recognition and sticking the correct cells together in tissues. हमें पता है टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. तो कह रहा है कि जब टिश्यूज में सेल की स्टिकिंग करनी होती है एक दूसरे के साथ, तो उसमें जो सेल की रिकग्निशन करनी होती है, पहचान करनी होती है, उसमें कौन हेल्प करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane regulates cell interaction with environment by controlling transport of material across cell. Transport across plasma membrane occurs to maintain a suitable pH and ionic concentration within the cell for enzyme activity. Next are the techniques used in studying cell membrane. The biophysical imaging techniques such as atomic force microscopy and super resolution fluorescent microscopy have been developed to study biological structures. Scanning electron microscopy (SEM) is one of the fundamental techniques for membrane characterization. It gives the morphology and topography data of the prepared membranes. SEM can be used to determine the pore size in the case of a porous membrane. So students, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.